9th class English Unit 6 Nasiruddin. Every year Nasiruddin Day is celebrated in Turkey with great pomp and show. Every year Nasiruddin Day हर साल नसीरुद्दीन का दिन is celebrated मनाया जाता है in Turkey तुर्की में with great pomp and show बड़ी धूमधाम से नसीरुद्दीन का दिन यौम नसीरुद्दीन तुर्की में हर साल मनाया जाता है. The age in which he lived is not exactly known. The age in which he lived वो ज़माना जिसमें वो रहा करते थे या ज़िंदा थे is not exactly known. वो सही तौर पर मालूम नहीं है. There are even doubts about the country of his birth. यहाँ तक कि उसके मुल्क के बारे में भी शुकूक व शुबहात है कि किस मुल्क में पैदा हुए थे. मुल्क भी मालूम नहीं है. The Iranian claim ईरानियों का दावा करते हैं that he was an Iranian कि वो एक ईरानी थे. The Turks have their own claim और तुर्कों का अपना दावा है. The latest claim is that of the Russian और सबसे आखिरी जो है दावा वो रूसियों का है who say that he was born in Bukhara कि वो बुखारा में पैदा हुए थे. Whatever his place of birth उसकी तारीख़ी पैदाइश जो भी हो and nationality और कौमियत जो भी हो might have been जो भी हो the fact remains हकीकत ये है that his anecdotes are famous all over the world. In fact, the fact remains हकीकत ये है that his anecdotes are famous all over the world कि उसके हिकायात दुनिया भर में मशहूर हैं. Several volumes of stories about Nasiruddin have been published. और नसीरुद्दीन के हिकायात के बारे में फनी यानी मज़ाहिया हिकायात के बारे में कई किताबें शाया हो चुकी हैं. A translation of stories relating to funny situation translation तर्जुमा हो चुका है of the stories इनकी कहानियों का relating to the funny situation इसकी मज़ाहिया हिकायात से मुतालिक और his life उसकी ज़िंदगी के मुतालिक has been published in Chinese ज़ुबान में भी शाया हो चुके हैं. In Russia a novel has been published और रूस में एक नावल छप चुका है शाया हो चुका है. The life of नसीरुद्दीन की ज़िंदगी से मुतालिक रूस में नावल भी शाया हो चुका है. Several volumes of his stories उसकी कहानियों की कई जिल्दें have been published शाया हो चुकी हैं in उर्दू में and पश्तो में इनकी कई वॉल्यूम शाया हो चुकी हैं. कई किताबें इनकी कहानियों की मुतालिक पश्तो और उर्दू में छापी जा चुकी हैं. They are often repeated by the people जिसको लोग बार बार दोहराते हैं. The stories of नसीरुद्दीन are popular नसीरुद्दीन की कहानियाँ बहुत मशहूर हैं पॉपुलर मशहूर हैं because they deal with the experience of क्योंकि ये डील ताल्लुक़ रखते हैं एक्सपीरियंस तजुर्बात से और डे टू डे लाइफ रोज़मर्रा ज़िंदगी की तजुर्बात से ताल्लुक़ रखते हैं. इनकी कहानियाँ रोज़मर्रा ज़िंदगी के मुतालिक हैं. He had been a tailor वो एक दर्जी थे. A merchant एक सौदागर थे. A doctor एक डॉक्टर थे. And a judge और एक जज थे. He had traveled widely आपने दूर दराज का सफ़र किया. Here are a few amusing stories about नसीरुद्दीन यहाँ पर नसीरुद्दीन के मुतालिक चंद मज़ाहिया कहानियाँ हैं. नसीरुद्दीन requested a friend named Jalal नसीरुद्दीन ने
اپنے دوست جلال سے التجا کی، درخواست کی ٹو اکمپنی ہم کہ اس کا ساتھ دے آن اے جرنی ایک سفر پر، وہ اس کا ساتھ دے ایک سفر کے دوران۔ اس نے جلال سے ریکویسٹ کی کہ وہ اس کا ساتھ دے، اونلی آن ون کنڈیشن، صرف ایک شرط پر۔ سیٹ جلال، جلال نے کہا دیٹ یو لینڈ می یور کلوک، کہ تم مجھے اپنا چوغا دو گے، ادھار دو گے، لینڈ ادھار دو گے چوغا، بیکاز مائن از worn آؤٹ، کیونکہ میرا پٹا پرانا ہے، میرا پرانا ہو چکا ہے۔ نصیر الدین گیو اے نیو اینڈ ویری فائن کلوک ٹو جلال، نصیر الدین نے جلال کو بہت بہترین اور نیا چوغا دیا۔ آن دا وے، راستے پر، نصیر الدین میٹ another friend، نصیر الدین ایک دوسرے دوست سے ملا، اینڈ said to him، اور اسے کہا سر میٹ مائی فرینڈ، جناب میرے دوست سے ملیے، جلال جس کا نام جلال ہے، دا کلوک دیٹ ہی از ویئرنگ از مائن، اور یہ چوغا جو اس نے پہن رکھا ہے یہ میرا ہے۔ when the friend had left، جب دوست جا چکا، جلال protested، جلال نے بہت جو ہے شکایت کی، protested شکایت کی، وائی کیوں، ڈیڈ یو ٹیل دیٹ مین، کیوں تم نے اس آدمی کو بتایا، دیٹ دا کلوک واز یورس، کہ یہ چوغا تمہارا ہے۔ نصیر الدین پرامز، نصیر الدین نے وعدہ کیا، دیٹ ہی would not repeat the mistake، کہ وہ ایسی غلطی کو دوبارہ نہیں دہرائے گا۔ نصیر الدین نے وعدہ کیا۔ تھینکس فار دا لسننگ۔